गुड इवनिंग जी। तारीख है 19 अक्टूबर। रात के बज रहे हैं 10। हम हैं शायद 5 मिनट लेट, शायद नहीं, एग्जैक्टली 5 मिनट लेट है। और सबसे पहले एक बार वीडियो का फीडबैक दे दीजिए। वीडियो वॉइस कैसी आ रही है? अगर ठीक आ रही है तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी शुरू से। तो जिस बात का आशंका थी, जिस बात की डर थी, एग्जैक्टली वही हुआ। सबसे पहले चलते हैं अपनी पोजीशंस और निफ्टी की इसमें। ये देखिए, निफ्टी कल तक जब ये अपने सपोर्ट लाइन के ऊपर था, वी वर बुलिश। लेकिन जब कल निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे डाउन ट्रेंड किया और लोअर बॉटम बनाया, तो हमें डाउट हुआ कि ये लोअर बॉटम देख के लग रहा है कि निफ्टी लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। और हमने बोला था जब तक इसके ऊपर है वी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर इसके नीचे आता है शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो जाता है। मूविंग एवरेज क्लस्टर के नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर इसको तोड़ेगा तो मीडियम टर्म इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसको तोड़ेगा तो काफी लंबा इसमें कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी ने अपने क्या किया, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब क्या संभव है? 19,618 कल संभव है कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके, अभी इसका ऊपर जो 19,713 था, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, आप ट्रेंड को मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव ही कंसिडर करें। ठीक है, यानी आने वाले तकरीबन 1 से 2 हफ्ते ये नेगेटिव रहेगा जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, और संभव इसके यहाँ तक जाकर वापस से एक पुल बैक ले और इस लेवल को टच करे। ठीक है, तो जैसे जैसे टर्न डेवलप होगा वैसे से हम इसको ध्यान देंगे। डेली चार्ट में अगर फॉलो करें तो डेली चार्ट में इसका MACD भी नेगेटिव हो गया। देखिए, तो अगर इंट्राडे चार्ट को देखें तो इंट्राडे में क्या हुआ है, ये देखिए, इंट्राडे में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाकर और नीचे से ये रिट्रेस किया है लास्ट कैंडल। तो चूंकि रिट्रेस किया है और अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट चार्ट इसके ऊपर बंद नहीं हुआ है, तो शो तो नेगेटिव है। इसको लाइन चार्ट देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस कंसोलिडेशन को थोड़ा तो हम बुलिश हो गए थे, वापस आकर सपोर्ट लिया ये, और फिर देखिए लोअर बॉटम्स की श्रृंखला बनाते हुए फिर ऊपर गया। तो शॉर्ट टर्म निफ्टी इज बेरिश। ठीक है, शॉर्ट टर्म निफ्टी इज बेरिश। अब अगर इसके आप वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं दिखाई देगी। थोड़ा सा तो नीचे टर्न किया है ये, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या आप 13 पकड़ लें, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आप कंसोलिडेशन फेज ही मान सकते हैं जब तक ये अपनी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे न जाए। और इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने का मतलब है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ना। ठीक है, तो बस लेवल्स को ध्यान में रखिए और अपनी पोजीशन बनाए रखिए। अब की बार निफ्टी में बुलिश तभी होंगे जब इसका सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट बिकम पॉजिटिव। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी क्या की बात हम करें तो बैंक निफ्टी में इस लेवल की बात कर रहे थे कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप का 2 बार सपोर्ट लिया था इस लेवल को और इसने इसको तोड़ दिया। तो जो हमने इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी ऑप्शंस में प्लस फ्यूचर्स में, वो हाईली प्रॉफिटेबल पोजीशन है और इस पोजीशन को हमने आज ओपन भी रखा है। पहले तो मन किया कि इसको एक बार बुक कर ले, और जो कि संभव है कि रिट्रेसमेंट करके मूविंग एवरेज के क्लस्टर को टच कर सकता है, लेकिन जितने अच्छे सपोर्ट को इसने तोड़ा है इसके ऊपर जाने की संभावना कम है। और नीचे इसके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है अराउंड 44,000 के।
तो शायद ये गैप जो है 800 पॉइंट का ये मिल सकता है, इसलिए हमने पोजीशंस को ऊपर रख रखी। एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच कर जाएगा, विल एग्जिट द पोजीशन वंस। एंड इफ यू लुक एट दिस एमएससीडी चार्ट ऑन द डेली चार्ट, ये बहुत अच्छा बेरिश सिग्नल दे बना रहा है। चलिए, तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी कहानी, लेकिन स्टॉक्स में कुछ और कहानी चल रही है। अभी मैं आपके साथ अपनी पोजीशंस डिस्कस करूंगा और फिर आप देखिए कि कितने शानदार तरीके से अगर आप स्टॉक्स में कैश मार्केट में पोजीशन क्रिएट करते हैं तो कितने शानदार रिटर्न बन सकते हैं आपको स्टॉक्स में। फर्स्ट स्टॉक इज जोमेटो। तो जोमेटो में जिस टाइप का इसने रन अप दिया आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन फेज, दिस वाज मतलब एक्सट्रीमली मतलब बहुत अच्छा था, और सुपर ट्रेंड अभी भी इसके पॉजिटिव, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को हमने वीकली चार्ट देख के लिया था, लेकिन इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी पोजीशन इसमें निकाल दिया था जब इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, और बहुत नॉमिनल अमाउंट इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत नज़दीक है, तो वे स्टिल होल्डिंग इट and we'll take a call once it goes below its 200 exponential moving average. By the way, for the disclaimer, I would like to let you know that I have exited Wipro today in loss, of course. We purchased somewhere here at the breakout level, then we hold this level. When its super trend become positive, negative, sell हुआ तो हमने इसे hold किया था just because its structure on the weekly chart was still intact and its MACD in the this was comfortable. But today when it gap down, इसकी ओपनिंग हुआ 3% की, तो all its structure got distorted. MACD on the weekly chart went below 50. MACD also gave the sell signal overall negative. If you follow this 200 exponential moving average on the weekly chart and the daily chart, both are prices well below its 200 exponential moving average. और इस पे देखें तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ है, तो इट इज अल्ट्रा वीक. There is no point in holding this stock because it may even देख रहे हो किस टाइप से इसमें गिरा है, पके हुए आम की तरह. तो दिस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इट में स्टक योर मनी फॉर द अंडर 6 months also. It has a potential this type. तो बट ऐसा नहीं कि हमारी नजर से बाहर गया. The moment it will gain strength, will and re-enter this stock. But at this point, I exited this stock in loss, and I exited in full quantity. No point in holding it further. And then third stock is CDSL. CDSL में जिस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, this is not performing in that way, and it is retracing in and it's actually consolidating. It again gave a breakout, then again इससे pull back आ गया. Basically, it is not that much क्या बोलेंगे, its movement is not that much lucrating. But we're holding it till its super trend on the weekly chart is positive. Once it goes below it, we'll exit it. Then third is ITC, the stock that we added yesterday. It is still good, nothing worry about. We added only the first tranche of money, so there's no doubt about it. Polymedicure, it's consolidating its MACD on the weekly chart. We'll review it on the closing basis, but it has given a sell signal. Means what? It has lost the momentum. But what about this volume build-up that happened at the breakout level? It may happen. This is not actually a sell signal. It is a reflection that yes, the stock is losing the momentum on the weekly chart itself. But we'll see how it behaves. We'll exit this stock only its super trend become negative on the weekly chart. Otherwise, we'll hold it. We can reduce our exposure in this stock up to a nominal nominal amount, but will not exit it completely till its super trend is positive. I'm telling you, super trend with ATI value 1 on the weekly chart and its MACD on the weekly chart.
These two are such a marvelous indicator that they will never let you down. This is such a powerful tool. If you look at this Tata Motors, the stock that we purchased uh, a day or before, ये देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है. तानला शानदार. ओह नहीं, तानला नहीं. Tanla actually gave a breakout on 10th, and then it retraced back and again got back into consolidation phase. So this stock has become actually a trap. So we'll see. Once its super trend become negative, we'll reconsider this stock. We are holding this stock till the time its super trend on the weekly chart is positive. Once it goes below it, we'll reconsider to exit a portfolio in this stock. We are already sitting on this stock on a huge profit. So if it goes below it, it will be a social level. At least it is not holding my principal amount. Yes, if you look at the LNT, last until it is still. Yesterday we told that we'll be holding this stock till its previous swing low of 3027. It is intact. If you look at the today's price movement, you'll find what happened to this. Its RSI on the daily chart. It has retraced back and bounced back from its RSI 60 level, and price is also bounced from this 20-day exponential moving average. So there is a high possibility that the stock may bounce back from here and the price also. But we'll be bullish on this stock once it goes above this 3116 level, and we consider deploying further money in this stock, but not at this point. If you look at this MACD, its price on the weekly chart, it is actually following the advanced GFS strategy of Malkan's view. Its weekly RSI is above 60, monthly is above 60, and daily is taking support at RSI 60 level. And there is every possibility that it may bounce back from here. Take care. Nothing to worry about. Now solar industries, very much expected. This stock we exited at 50% quantity when it broke its previous swing low, a very short previous swing low. Then the stock, if you look at the line chart, this stock has actually touched this 13-day exponential moving average and is trying to bounce back from here. So if it consolidates for some time and in a short range here and then start moving upward, then that will be the point to add this stock further. Kalyani, what a movement it gave today. There's a time when this stock came to this level 266. It was down by some, let me see, what percentage, man. In the daytime, this stock was down by some 16%. Can you imagine? I feel this stock is not for the people. I like to see its hammer. Look at the volatility in this stock. The way it has moved upward. That is actually not long lasting. And I was very much anxious about its movement. That it is moving in a 90-degree angle and it is well above its median value. So there is every possibility that this stock may retrace back and retest its moving average. It happened today, but it went back again to the top. But this type of structure is not sustainable in the long run. I feel this stock will come down, and it is the right time to offload this stock in chunks and pieces. So I have not offloaded it yet. Tata Alexi. This stock is good, but considering the market scenario, I have not deployed any further money in this stock. This stock is my radar actually. I'll enter it. Wow. If you look at this Paytm on the weekly chart, on the daily chart, this stock will be a buy once it goes above its
previous swing high. But you look at this MACD on the daily chart, weekly chart, very beautiful structure. It broke out from here. Then in the next candle, there's a huge high upside wick. Means what? It once gone up to this height of 987 level. Then the seller bias actually offloaded its position back and took the price to its breakout level, so that everybody in the market could not assess that somebody is buying this stock. And look at what happened this week. In 3 days itself, 3 to 4 days itself, the stock has given 4% return. It was very much expected. Very good. FSL, this stock has broken up its consolidation zone, and there's every possibility that this stock may run from here. But if we look at its pattern, movement pattern, this stock moves in one go, then consolidate for a large period of time. Actually, I don't like this type of pattern here. This type of movement actually bored you like anything. BSC, wow, this is the wonderful stock. We exited this stock somewhere here. Then it came down, retested its support level, then bounced back from here. The moment it crossed its previous swing high, we again enter into this stock here and see the beautiful run up it gave. It consolidated for 7 to 8 days in this small tight zone. We actually put an alert in the upside and the downside. And today morning when it broke upside, I was very much intuitive to buy some more quantity. Look at this MACD. MACD on the daily chart is such a beautiful, it is in such a beautiful structure that किसी के मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, it's mouth watering, ठीक है, लेकिन considering the market scenario, the Nifty and the Bank Nifty setup, it is not advisable to put in any extra money for the long side in the market, because there is every possibility that the price may correct. If the Nifty corrects, everything can correct, but you'll be lucky if the stock you are holding and that too in huge quantity and that is not correcting. Instead, it is moving 3.35% in a day. This is the one stock, this Tata BSC. Then the next is Kalyan Jewelers. These two stocks, my portfolio today closed with 1% up when market was down by 0.5%. My portfolio is up by 1%. My allocation in these two stocks, it is huge. It has actually distorted my portfolio. But the way these stocks are performing, outperforming the market, I'm not willing to offload it. Anyhow, तो क्या हुआ, हमने सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर लिए. एक बार हम बात करते हैं किसकी, इसकी डॉलर में क्या हो रहा है. डॉलर में थोड़ा लोअर पीक्स बनने स्टार्ट हुए हैं. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट डॉलर में, if this dollar goes below this 105.7 level, a rally can come in equity market. There is no doubt. Yes, when it break this previous swing low of 105 on the weekly chart also, it will break the previous swing low. Nothing to worry about. If you look at the USD INR, wow, this USD INR has actually broken down of it this previous swing. यहाँ से, this is actually very positive news. See, very good news. USD INR तो बहुत अच्छा है, लग रहा है यहाँ से. Then if you look at this oil में भी weakness नहीं आई है. Oil भी high structure मूव कर रहा है, but unless it goes above its previous swing high, it will be not that much detrimental for the market. Let us look at the USD
यूएस ट्रेजरी। यूएस ट्रेजरी क्या किया भाई, ये ऐप है, ये ऐप है तो सबको खींच ही लेगा। इसने वीकली चार्ट में देखो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। These are the points that one should consider. This is actually making the whole scenario so bearish that whatever you say, it is correcting, not correcting. But if US Treasury is positive, means the hell lot of money available in the world, it will flow back again into US Treasury. और पैसा कहीं पे टहल थोड़े रहा था, कहीं था तो किसी न किसी स्टॉक में था। इक्विटी मार्केट रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहा था। जब यूएस ट्रेजरी मूव करने लगती है तो रिस्क ऑन ट्रेड स्टार्ट होता है। रिस्क ऑन ट्रेड में क्या होता है, जो रिस्की एसेट्स हैं, अभी हमारे लिए रिस्की एसेट्स तो इक्विटीज है, लेकिन फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द डेवलपिंग मार्केट स्टॉक्स, दे आर द small caps, micro cap stocks, they are risky assets. So if the blue chip stocks, that is the US Treasury, it starts moving upward, they sell their portfolio of the emerging market basket and deploy that money in this US Treasury. ठीक है, let us look what is happening with Dow Jones. Dow Jones ठीक है, वीक ही है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं इस वीक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है। लेकिन आप अपने स्टॉक्स की पोजीशंस को बहुत केयरफुली वॉच करिए। If the week showing any sign of weakness, just cut your losses. Exit the position without any mercy. That is the only way to survive in the market. That is the only sutra you can say. I would like to share with you people. This is the only way. Just cut your